बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-u-अलैकुम। कल असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर है। स्क्रीनिंग टेस्ट का पैटर्न क्या होगा उसको समझने के लिए हम सैंपल के तौर पर पास्ट पेपर 2021 को स्टडी करेंगे। दिस पेपर विल बी कंप्लीटली सॉल्व्ड एंड डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन था 4 lettered pairs A to D follow our related pair of words given in capitals. Select the lettered pair that best expresses our relationship similar to that expressed in the original pair in the capitals. ये जो आपको ओरिजिनल पेयर दिया गया है कैपिटल्स में, इसकी आपस में जो रिलेशनशिप बनती है सेम वैसी ही रिलेशनशिप इसके आंसर में होनी चाहिए। हैमलेट का विलेज के साथ जो रिलेशन बनता है सेम वैसा ही रिलेशन हमने नीचे वाले ऑप्शंस में से चूज करना है। दैट विल बी आवर आंसर। हैमलेट बोलते हैं एक छोटे से सेटलमेंट को दैट इज स्मॉलर देन अ विलेज, यानी कि विलेज की स्मॉलर वेरिएंट जो है वो हैमलेट है। नीचे ऑप्शंस क्या है? हाईवे कार, बिल्डिंग स्काईस्क्रैपर, फोटोग्राफ पोर्ट्रेट, कॉटेज हाउस। सो जो बेस्ट आंसर है दैट इज कॉटेज हाउस। हाउस की मिनी वर्जन होता है कॉटेज, स्मॉल हाउस। नेक्स्ट है पोर्टिको बिल्डिंग। पोर्टिको और बिल्डिंग जो है वो तकरीबन मिलती जुलती चीजें हैं। पोर्टिको इज अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ रूफ दैट इज सपोर्टेड बाय कॉलम्स एट रेगुलर इंटरवल्स। बिल्डिंग क्या होती है? बिल्डिंग इज अ स्ट्रक्चर विद अ रूफ एंड वॉल्स। सिमिलर रिलेशनशिप यहां पर बनता है फोर्ट और फोर्ट्रेस का। दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। फोर्ट यानी कि किला क्या होता है? इट इज अ स्ट्रक्चर विद वॉल्स और इसमें डिफेंसिव मेजर्स ऐसे लिए जाते हैं जिससे इनिमी के अटैक से बचा जा सके। फोर्ट्रेस क्या है? फोर्ट्रेस इज द सेम थिंग बट यूजुअली इट मीन्स अ लार्जर एरिया। सो द आंसर इज फोर्ट, फोर्ट्रेस। केयरलेसनेस, एक्सीडेंट। केयरलेसनेस की वजह से एक्सीडेंट होता है। मनी की वजह से लक नहीं आती, ट्रॉफी की वजह से विनर नहीं आता, रनर की वजह से फटीग नहीं आती, लेकिन हार्डवर्क की वजह से सक्सेस जरूर मिलती है। सो द आंसर इज डी, हार्डवर्क, सक्सेस। कोच, टीम। Our team has a coach. Similarly, a senate has a senator. कोई भी चीज फ्रेजाइल हो तो उसमें क्रैक आ जाता है। फ्रेजाइल बोलते हैं ब्रेकेबल को। सिमिलर रिलेशन उठाना है हमने अब। सिमेट्री, डेथ। सिमेट्री बोलते हैं ग्रेवयार्ड को। प्लाएबल, बेंड। प्लाएबल बोलते हैं इजीली बेंड को। तो जो प्लाएबल होता है वो बेंड हो जाता है। ये है हमारा आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। हाइड्रा बोलते हैं इन्वर्टिब्रेट को जो कि पानी में रहता है। इरिड्यूसेबल, जो रिड्यूस ना हो सके, यानी कि ये तो ऑपोजिट रिलेशन है। तो हमारा जो बेस्ट आंसर है दैट इज प्लाएबल, बेंड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है उसके लिए एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को हमने अच्छे तरह से पढ़ना है ताकि इन क्वेश्चंस का जवाब दिया जा सके। सिज्मोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। सो सिज्मोलॉजिस्ट ने डिवाइस किए हैं 2 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट to describe and record information about the earthquakes. The most widely known measurement is the Richter scale, a numerical logarithmic scale developed and introduced by American seismologist Charles R. Richter in 1935. इस स्केल का पर्पस क्या है? To measure the amplitude of the largest rays recorded by standard seismograph 100 kilometers from the epicenter of earthquake. Tables have been formulated to demonstrate the magnitude of any earthquake from any seismograph. For example, a 1 unit increase in magnitude translates into an increase of 30 times in released energy. To put that another way, each number on the Richter scale represents an earthquake 10 times as strong as one of the next lower magnitude. Specifically, an earthquake of magnitude 6 is 10 times as strong as an earthquake of magnitude 5. यानी जो earthquake magnitude 5 का होगा उसके कंपैरिजन में जो magnitude 6 का earthquake है वो 10 times ज़्यादा strong है। On the Richter scale, earthquakes of 6.75 are considered great and 7.0 to 7.75 are considered major. An earthquake that reads 4 to 5.5 would be expected to have caused localized damage and those of magnitude 2 may be felt. It is estimated that almost 1 million earthquakes occur each year, but most of them are so minor that they pass undetected.
In fact, more than 1000 earthquakes of a magnitude of 2 or lower on the Richter scale occur every day. हमने इस पैसेज को रीड करने के साथ साथ जो हमें लगा कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं या काम आ सकती हैं उसको हाईलाइट कर लिया. अब देखते हैं क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टेबल्स. टेबल्स की क्या वैल्यू है? टेबल्स वाली लाइन कहाँ है? ये है. टेबल्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी अर्थक्वेक. ऑप्शंस देख लेते हैं. दे अलाउ अस टू इंटरप्रेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स. दे हेल्प अस टू कैलकुलेट आवर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थक्वेक्स. दे रिकॉर्ड ऑल अर्थक्वेक्स. दे रिलीज द एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक्स. सो द आंसर इज ऑप्शन ए. Demonstrate the magnitude. Interpret the magnitude. Next question है, according to information in the passage, what does Richter scale record? Richter scale record क्या करता है? The purpose of the scale is to measure the amplitude of the largest trace. So the answer is the amplitude of the largest trace. The word standard used in the passage could be replaced by. स्टैंडर्ड का मतलब होता है ना जनरल वैल्यू या जनरली कंसिडर्ड, तो उसका सिनोनिम क्या बनता है? कन्वेंशनल. कन्वेंशनल मीन्स नॉर्मल, स्टैंडर्ड, जनरली कंसिडर्ड. द वर्ड अनडिटेक्टेड यूज्ड इन द पैसेज इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू. अनडिटेक्टेड होता है जो डिटेक्ट ही ना हो. विद नो नोटिस. द पैसेज डिस्कसेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिच्टर स्केल एक्सेप्ट. अब वो कहता है ये जो मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं ना, इसमें से 3 ठीक हैं लेकिन एक ठीक नहीं है. यानी कि पैसेज में 3 चीजों के बारे में बताया गया है, किसी एक चीज के बारे में नहीं बताया गया. आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि पैसेज में डिस्कस नहीं हुआ. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1935, ये पैसेज में था. इट वॉज डेवलप्ड बाय एन अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट, ये भी पैसेज में था. इट हैज अ स्केल ऑफ 1 to 12. इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स. तो ये जो 1 to 12 स्केल वाली बात है ना, ये पैसेज में नहीं थी. तो इसका मतलब है हमारा आंसर भी यही है. सो इस तरह से आपने पूरे पैसेज को पढ़ना है और इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना है. 3 से 4 ऐसे सवाल होंगे जिसका आंसर आपको पैसेज में से ही मिल जाएगा. नेक्स्ट इज चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इन द कैपिटल लेटर्स. ये जो कैपिटल लेटर में वर्ड दिया गया है इसके ऑपोजिट इन मीनिंग वाले को सिलेक्ट करना है. लिबरल. लिबरल का मतलब होता है ओपन टू न्यू आइडियाज, यानी जो बहुत ओपन माइंडेड हो. तो इसका बेस्ट आंसर है कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव ऐसे शख्स को बोला जा सकता है जो नैरो माइंडेड होता है या पुराने ख्यालात का मालिक होता है, न्यू आइडियाज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता. मोटाइल. मोटाइल मीन्स कैपेबल ऑफ मोशन. द ऑपोजिट वुड बी इमोबाइल, जो कि मूव ना कर सके. इमिटेशन. इमिटेशन होता है नकल करना, कॉपिंग. ऑप्शंस हैं सीरियस, सेपरेट, स्टेबल, जेन्युइन. द आंसर विल बी जेन्युइन. एजाइल. Agile is the person who is able to move quickly, while stiff is the person who cannot be easily moved, or it can be called rigid. Fallow. Fallow word mostly use होता है land के लिए. The land that is uncultivated or unploughed. जाहिरी बात है वो uncultivated है तो वो unproductive होगी. तो opposite क्या हुआ? Productive. Pertinacious का मतलब होता है persistent. Each of the following questions consist of a sentence with all or part of the sentence underlined. अब जो आपको अगले 5 से 6 क्वेश्चंस नजर आएंगे ना, वो इसी तरह के हैं कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें से कुछ पार्ट अंडरलाइन किया हुआ है. आपने रिक्वायरमेंट्स देखनी है स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश की. अगर तो आपको लगता है कि वो अंडरलाइन वाला जो पार्ट है वो बेस्ट है, तो आपने ऑप्शन ए को सिलेक्ट करना है. और अगर वो गलत है तो आपने बेस्ट फ्रेज चूज करना है फ्रॉम द ऑप्शंस. इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है अ हीप ऑफ ब्रोकन ग्लास एंड ट्विस्टेड मेटल. द wreck he thought was an eyesore. wreck नहीं होता, wreckage होता है. wreckage बोलते हैं डेब्रिस को, यानी किसी चीज को अगर बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उसका जो बचा खुचा हिस्सा होता है जिसको आप रिमेन्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड wreckage. उसने कहा है ना अ हीप ऑफ ब्रोकन ग्लास एंड ट्विस्टेड मेटल, यानी कि उसका डेब्रिस है. द wreckage he thought was an eyesore.
Except for the fact that you are missing 3 pages of work, your portfolio appears to be of extremely high caliber. Caliber बोलते हैं quality को. Due to the fact that you are missing 3 pages of work, your portfolio appears to be of extremely high caliber. The data are not sufficient to require an investigation. The data is not sufficient to require an investigation. When the department was expanded, it was clearly a wise move. Clearly, it was a wise move for the department to be expanded. This is the correct answer. The geometrical design of the quilt was traditional, but using strikingly modern fabrics. Quilt is the decorative cover for the bed. The geometrical design of the quilt was traditional, but the fabrics used were strikingly modern. Complete the sentences by choosing the most appropriate option. Because a light travels faster than sound, lightning appears to dash thunder. क्योंकि लाइट साउंड से ज्यादा तेज ट्रैवल करती है, इसलिए lightning appears to go before thunder. Go before का मतलब क्या हुआ कि थंडर से पहले आपको lightning दिखाई देती है. The unique world of the film is dash both wholly recognizable and unfamiliar. अब यहां पर उसने दो ऑपोजिट चीजों की बात की है कि ये कंप्लीटली रिकॉग्नाइजेबल भी है और अनफेमिलियर भी है. यानी कि द यूनिक वर्ल्ड ऑफ द फिल्म इज कॉन्ट्राडिक्टरी. Optical instruments such as cameras, microscopes, and projectors all produce images with lenses. Because auto repair places have such dash rates, many community colleges have dash courses in automotive mechanics. Shatting होता है जी shocking या upsetting. Impertinent बोलते हैं irrelevant को. Exorbitant बोलते हैं reasonably high को. Because auto repair places have reasonable rates, many community colleges have introduced courses in automotive mechanics. Your speech was not relevant to the topic. We plan taking Professor Johor's class unless he is on vacation next term. If I were you, I would take the introductory course first before trying to tackle the more advanced ones. The electrical field produced by a single wire is not very strong, so to increase it, the wire is wound into a coil. Condensation involves the change of a substance from its vapor to its liquid state. His thirst for knowledge left him no lawyer for anything else. इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 31 to 60 और फिर मैथ्स के क्वेश्चन थे 61 to 70. इसके बाद जो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनको देख लेते हैं. नेशनल फाइनेंस कमीशन tries to resolve the financial matters between Federation and the provinces. CPEC was launched in 2015, 20 April 2015. Who wrote Mauj-e Kausar? Sheikh Muhammad Akram. River Indus extends to Arabian Sea from Thatta. During the partition of Punjab in 1947, India was granted a land link to Jammu and Kashmir via Amritsar. Liaquat Desai talks 1944 held after the failure of Dash to resolve differences between Congress and the Muslim League. Gandhi Jinnah talks. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले गांधी जिन्ना टॉक्स हुई थी. जब इसका फेलियर हो गया था फिर लियाकत देसाई टॉक्स हुई थी. लेंथ ऑफ ड्यूरेंट लाइन 2250 किलोमीटर. फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच पाकिस्तान ज्वाइंड? यूनाइटेड नेशंस इन 1947. पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का 1954 to 1962 का जो पीरियड है दैट इज नोन एज एरा ऑफ अलायंसेस. Dash was the great ambassador of Hindu-Muslim unity. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Through the mediation of Dash,
ताशकंद एग्रीमेंट हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1966। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमओडी के पेपर में तकरीबन 3 से 4 बार आ चुका है। किसकी मीडिएशन से हुआ था? सोवियत यूनियन। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन 1867। नेम ऑफ एनडब्ल्यूएफपी चेंज टू केपीके इन 2010। मौलवी तमीजुद्दीन elected as President of the First Constituent Assembly of Pakistan. Chinkara deer and peacocks are mostly found in deserts. The picture on the back of 100 rupee Pakistani note is of Ziyarat. Sub-Himalayan range is also known as Sivalik mountain range. Thal Desert is situated between Jihlam and Indus. In 1928, Allama Iqbal opposed Jinnah League and supported the Liaquat League. 1928 में इलामा इकबाल ने जिनाह लीग को अपोज किया था और सपोर्ट किया था लियाकत लीग को। लवारी टनल लिंक्स दीर विद चित्राल। Through dash of 1946, Pakistan resolution was amended. Through Delhi resolution. Khwaja Nazimuddin constituted the Basic Principles Committee in 1949 for the purpose to make recommendations to provinces, to prepare assembly regulations, to make preparations for the budget, to expedite the work of constitution making. Answer is option D. Wakhan Corridor separates Pakistan from Tajikistan. Trimmu Barrage is located at Jihlam. The reaction of Indian National Congress and All India Muslim League towards the Cripps mission proposal was: Muslim League accepted while Congress rejected, Congress accepted while Muslim League rejected, accepted by both or rejected by both. The Cripps mission was rejected by both. The ruins of Harappa are situated in district Sahiwal. Quaid-e-Azam joined All India Muslim League in 1913 at the persuasion of Maulana Muhammad Ali Johar. The Lucknow Pact of 1916 was concluded between Indian National Congress and All India Muslim League. At the time of partition of India, Kashmiris were divided into Muslim League and Congress. An action is right if it maximizes good for the self. एक एक्शन तब ठीक होता है जब ये सिर्फ और सिर्फ अपने भले को मैक्सिमाइज करे। ये फ्रेज इनमें से किससे ताल्लुक रखता है? सेंट्रलिज्म, सेल्फ रिलायंस, सोशलिज्म, ईगोइज्म। ईगोइज्म। स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवेरेनिटी। A person who recites Kalma of Islam verbally, not heartily, is called munafiq. Our personal matters are controlled by individual ethics. Determination of right and wrong for an individual society is called morality. Which surah of Quran has Bismillah twice? Surah Naml. What is the meaning of Mano Salwa in Islam? Food of heaven. Dash was the carpenter, Hazrat Zakaria. Social interaction is a basic human norm. Norm is a kind of rule of conduct. So social interaction is a rule of conduct for human. Which one of the following is not included in the themes of ethics? Kindness, meeting, love, sympathy. Meeting. जलसा इन नमाज इज। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जलसा कहते किसको हैं। जलसा इज द सिटिंग आफ्टर फर्स्ट सजदा और इट कैन बी कॉज्ड एज द शॉर्ट पॉज बिटवीन द 2 सजदास। सो जलसा इन नमाज इज वाजिब। फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी द गवर्नमेंट डिसीजंस शुड बी प्रोडक्टिव। ऑन एग्रीकल्चरल लैंड्स डैश इज लेवाइड, ज़कात।
The idea of determination of summum bonum, supreme good, was presented by Socrates. Misake Medina was signed between the Muslims and the Jews. To which prophet Zabur was revealed? Hazrat Daud alayhi salam. A man who does not follow any religion is called atheist. Relationship of Hazrat Lut alayhi salam with Hazrat Ibrahim alayhi salam is of nephew. Who among the following is not a member of Ashra Mubashra? Hazrat Abu Huraira. Quranic mandate of wuzu is mentioned in Surah Maida. Chief Minister of Balochistan in 2021, when this test was held, was Jam Kamal Khan. But now the current CM of Balochistan is Mir Sarfaraz Bugti. Shortest day in Southern Hemisphere is 22 December. The propagation of radio signals is greatly influenced by ionosphere. Which of the following is not rich in protein? Potatoes. The planets called the inner planets are Mercury, Venus, Earth, Mars. इनर प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है? ये सन है, सन के पास मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स. तो सन के नियरेस्ट जो 4 प्लैनेट्स हैं, दीज आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड ऑन रिश्टर स्केल? इसी पेपर के स्टार्ट में हमने एक कंप्लीट पैसेज देखा है जिसमें उन्होंने बताया है कि रिश्टर स्केल मेजर क्या करता है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक. इन पाकिस्तान द खरीफ क्रॉप अमंग द फॉलोइंग इज. खरीफ क्रॉप को हम मूनसून क्रॉप भी बोलते हैं. इट इज प्लांटेड विद द अराइवल ऑफ मूनसून in somewhere June and harvested between September to October. So among the following, the kharif crop is rice. Bahat is the currency of Thailand. The clear sky looks blue because of reflection of light. Which motorways are ready to be used as runways in any emergency? M1 and M2. Billafong Glacier, claimed by both इंडिया एंड पाकिस्तान इज कंट्रोल्ड बाय. बिलाफोंग ग्लेशियर जो है ये सियाचिन रीजन में प्रेजेंट है. दैट इज क्लेम्ड बाय बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. लेकिन प्रेजेंटली इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? पाकिस्तान. विच टैंक्स आर प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान? अल हमजा. व्हेन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर गॉट द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी? 2002. लोवारी पास कनेक्ट्स पेशावर विद चित्राल. Federal Minister for the Inter-Provincial Coordination is, at that time, Muhammad Mehboob Sultan, but now, Fawad Hassan Fawad. Sir Ratcliffe Award unjustly provided the Indians with land route to Punjab. Member countries of BRICS are, in 2021, BRICS के 5 members थे. ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. लेकिन अब ब्रिक्स के 10 मेंबर्स हैं. न्यू मेंबर्स कौन से हैं? इजिप्ट, एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई. विच इज द कैपिटल ऑफ अंगोला? लुआंडा. द मेन फैक्टर फॉर डिटर्मिनिंग अ रीजन्स क्लाइमेट इज टेम्परेचर. Kai Valley is ancient valley of Sindh situated in Jamshoro. Greece is famous for olive trees. Which one is the longest river in Punjab? Sutlej. The only fertile desert in the world is Great Third Desert. The Earth's smallest ocean is Arctic Ocean. One Belt, One Road, जिसको ओबोर कहा जाता है, is project of China, which is mainly to connect China with the Far East Asia. It is project. Light travels in a vacuum at the speed of 186,282 miles per second. Article 6 of the 1973 Constitution deals with high treason. This MCQ is also mostly repeated in the MOD papers. Which type of rainfall occurs in most of the world?
ओरोग्राफिक रेनफॉल और रिलीफ रेनफॉल। ये वो वाली रेनफॉल है जिसकी पिक्चराइजेशन हम बचपन से बुक्स में करते आए हैं। When the moist air moves over the range of mountains, cool down, produce clouds, and precipitate in the form of rain or snow. So this kind of rainfall is called orographic rainfall, which occurs in most of the world. Which of the following is most useful for measuring the shortest distance between two places on the earth and path between them? Globe. How many barrages are constructed on the river Indus? 6. Contaminated water can be purified by distillation. Distillation is the purification of water by the process of heating and cooling. Layer below the water table is pervious bedrock. In human eye, retina is light sensitive surface. 3 different ways of heat transfer: conduction, convection, and radiation. Leukemia is the disease of blood. In air pollution, the amount of oxygen increases and carbon dioxide decreases. एयर पोल्यूशन में ऑक्सीजन की अमाउंट इंक्रीज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की डिक्रीज होती है. Water covers 70% of the Earth's surface. The restrictive enzymes are used for cutting DNA at specific site. As altitude increases, the air pressure decreases. जैसे जैसे बुलंदी बढ़ती जाती है, एयर प्रेशर डिक्रीज होता जाता है. Icy celestial bodies revolving around the sun are called comets. Retina is made up of motor cells. Asteroids are dash, which are part of our solar system. Asteroids are rocky bodies. To kill bacteria in filtration plants, chlorine is used. Coagulation is a process which removes bacteria from water. A child playing outside in morning came inside the house to drink water. His pupil size changed. What part of brain is responsible for it? एक बच्चा घर से बाहर खेलते खेलते अचानक से घर में आता है to drink water. उसकी आंखों के प्यूपिल का साइज चेंज हो जाता है. Which part of brain is responsible for it? Forebrain. An aggressive form of chemical drug therapy meant to destroy rapidly growing cells in the body is called chemotherapy. The organic molecules which bind to enzyme and serve as a carrier for the chemical groups or electrons are coenzymes. Freezing point of water is 0 degree Fahrenheit. Which of the following planets is closest to the sun? Mercury. A capacitor is a device that A capacitor is a device that stores charge. Electric generator is a device that converts mechanical energy into electrical energy. Boiling point of water is 100 Fahrenheit. These are good pollinators of flowers, grasshoppers. White light from sunshine on green leaf, the leaf will look green because other than green colors are reflected by the leaf. Fuel used for the nuclear power plant is uranium. Penicillin antibiotic is obtained from fungi. If xylem vessels are damaged, the leaves won't be able to get food. ये सारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस हैं. That's why I'm not explaining them. Hussein Rahim Taha is the current Secretary General of Organization of Islamic Cooperation and he belongs to Chad. On February 11, 2021, Pakistan conducted a successful training launch of Dash cruise missile, Babur. APEC headquarters is located in Singapore. Dong is the currency of Vietnam. Louvre Museum is located in France. NASA's Perseverance rover landed at Mars on 18th February 2021.
Who presented the Pakistan Budget 2019 to 2020 in the National Assembly? Hamad Azhar. Boris Johnson belongs to Conservative Party. Northern Cyprus is a disputed area between. ये जब मैंने PMS के पास्ट पेपर्स करवाए थे तो उसमें इसको डिस्कस किया था. The runner-up team in Pakistan Super League PSL 5 2020 was Peshawar Zalmi. According to Economic Survey of Pakistan 2019 to 2020, agriculture sector grew by 2.67%. Unit of measurement to measure rain is millimeter or centimeter. When National Assembly passed bill to ban corporal punishment in Islamabad? 24 February 2021. What is the name of Pakistan-Turkish Joint Military Exercise 2021? Option B. Which department has been established by the Prime Minister on June 1, 2020 to combat the locust attack? Department of Plant Protection. OIC has 57 members. Iran-Pakistan gas pipeline project is also called Peace Pipeline. How many electoral college votes Donald Trump got in US elections 2020? 306. Human Rights Day is observed on 10th December. Dash ambassador was killed in DR Congo in February 2021. Italian. ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जिनको मुझे समझाने की जरूरत नहीं, जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो. Citizenship Amendment Act 2019 was passed by the Parliament of India on 11 December 2019. Pakistan Atomic Energy Commission recently opened its 19th Dash in Gilgit. Cancer Hospital. Dash is the documentary on bomb disposal squad of KPK police who won an Emmy Award in New York. Armed with Faith. Who won Mohammed bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Award 2021? Imran Khan. World Happiness Report 2021 में out of 149 countries पाकिस्तान का नंबर क्या था? 105. पेपर देने से पहले आपने रीसेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग देख लेना है कि पाकिस्तान किस नंबर पे आता है. Senate elections were held on March 2021. Nobel Peace Prize winner Malala Yousafzai partnered with Dash to produce several new programs. Apple. Youngest Pakistani mountaineer to climb the world's highest peak, Mount Everest, is Shehroz Kashif. This was the past paper of Assistant Director MOD 2021. Best of luck for the screening test that is going to be held tomorrow. For the latest updates, stay tuned to Corsilia. Thank you. Allah Hafiz.